all. I hope you all are doing okay and using this time to work on yourself. So, as we all know, English plays a major role in cracking exams and also helps to build our overall personality. So, here I am with some tips that I've used in my life and has helped me. I hope it helps you too. For some additional tests on English, or if you are preparing for exams like NDA, CDS, AFCAT, OTA, and etc., you can access our app on Google Play Store with the name of Karyappa Academy. So here we talk about 4 core skills. Instead of putting it into 4 different points, I have kept it in one. इसका केवल एक उद्देश्य है, वो ये कि आप इन चारों को एक तरह से देखो. विदाउट एनी ऑफ देम यू आर गोना लूज एट इट. मतलब इफ़ यू आर नॉट गुड विथ योर वर्ड्स और इफ़ यू आर नॉट एबल टू राइट इट, आप बोल नहीं पा रहे हो उस चीज़ को, सो यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट एज अ गुड speaker, or you will be able to converse in English. So in order to do that, you have to work on every particular skill I have written here. So I can give you an example कि आप कैसे start कर सकते हो, पर आपको अपनी strategy खुद बनानी पड़ेगी. Taking an example, you can read a newspaper, novel, and you can take a particular article from it or have views on it, and you can write about it. And once you are done, you can speak and talk to people on it and have a debate on it. And that will help you in building your overall confidence for speaking, reading, and writing. The second point is making points about your strength and weak points. When you're starting with English, मतलब आपने जब स्टार्ट किया इंग्लिश के साथ, तो आपको पता होगा कि आपकी स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स क्या है. शायद आप पढ़ लेते हो बट आपको बोलने में इशू आती है या आपको लिखने में इशू आती है. सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. थर्ड पॉइंट स्टेट्स दैट कि आपको अपने आप को हर दिन एक गोल देना है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म गोल. शॉर्ट टर्म हम पहले स्टार्ट करते हैं एक दिन से और लॉन्ग टर्म हम स्टार्ट करेंगे एक हफ्ते से. सो प्रिपेयर अ प्लान फॉर योर सेल्फ दैट यू हैव टू डू इन 1 day and 1 week and give assessments after that. The fourth point is practice. प्रैक्टिस में आपको टेस्ट देने हैं, आपको डिक्टेशन करना है, बिकॉज बिना असेसमेंट के आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो वो अधूरी है. क्योंकि जब तक आपने ये जाना नहीं कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, तब तक आप उसको सुधार नहीं पाओगे. सो इन ऑर्डर टू डू दैट आप अपना टेस्ट दीजिए और डिक्टेशन लीजिए. द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ एनालाइज. आपको अपने पूरे प्रोसेस को एनालाइज करने की ज़रूरत है फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ. आप अगर सारे प्रोसेस अगर ठीक से कर रहे हो, देन यू विल रियलाइज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, वेयर यू नीड टू पुट योर सेल्फ राइट, एंड दिस विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज. At the end, I will only tell you to repeat the cycle, and I hope it will help you in improving your English. Until then, stay positive, and if you like the video, just go and subscribe, like, comment, and share.